Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Welcome to all of you to our next and important session of educational psychology. And in this session, we discuss another theory of intelligence, that is, not only one. We discuss here two theories of intelligence, that is, multifactor theory and group factor theory. Okay, so let's start with the concept which is very important for our exam point of view of multifactor and group factor theory. Let's start. So first we discuss about multifactor theory, or it otherly known as anarchic theory of intelligence. तो आमे समस्ते जानी चंती जे एई थ्योरी टाकू किए देइथिले ना E.L. Thorndike. ओके, बट मुझे भी तुम आगु कही जे एक्चुअली ए कॉन्सेप्ट नहीं कि आसथिले कि ना स्टर्नबर्ग, किंतु ए थ्योरी को डिफाइन आउ ए थ्योरी को स्टर्नबर्ग ने थर्स्टन आउ ए थ्योरी को डिफाइन आउ प्रॉपर्ली एलाबोरेट कले किए ना E.L. Thorndike. तो थॉर्नडाइक कौन कौन कहिथिले मल्टीफैक्टर थ्योरी रे ता बाबद रे हम डिस्कशन करिबा. ओके, then multifactor theory. E.L. Thorndike proposed that there are specific stimuli and specific response. आमे थॉर्नडाइक करो जो लॉज ऑफ theory of learning आमे ऑलरेडी जानि चंदी से बाबद रे. तो से थ्योरी भलिया एठी स्पेसिफिक स्टिमुली उपरे स्पेसिफिक रेस्पॉन्स केमिति डिपेंड करे आउ इंटर जो डिपेंडेंट केमिति रुहे गुटे स्पेसिफिक स्टिमुली और स्पेसिफिक रेस्पॉन्स. तो आमे जो प्रकार स्टिमुली दबा सेही सेम वे रे हमकु रेस्पॉन्स आसीबो. एई कांसेप्ट को बेस करिकि से थ्योरी को से डिफाइन करथिले. एंड ही बिलीव दैट देयर वाज नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी और जी फैक्टर. ओके, जी फैक्टर जोटा आमे कहउतन जनरल फैक्टर, से भलिया फैक्टर किछि इंटेलिजेंस रे नाही बोली से डिफाइन कले. And Thorndike found all factors in intelligence represent a specific mental ability which is different from each other. तो आमे जते प्रकार रो इंटेलिजेंस देखिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को ये एम्फासाइज करूथले. एंड ही प्रोवाइड द कांसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एज डिफरेंट इंटेलिजेंस आर ऑफ डिफरेंट मेंटल एबिलिटी एंड व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम each other. समस्ते समस्तଙ୍କ ठारू सब इंटेलिजेंस को ठारू डिफरेंट बट एसोसिएटेड टू लाइक ब्रिक ऑफ वॉल्स. जो आमे जेमिति इटा जोड़े की आमे गोटे घर कांथटे तयारी करंती एंड दे आर कंबाइनली पैक्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म ए वॉल. सिमिलरली हियर डिफरेंट इंटेलिजेंस हैव देयर ओन वर्क और फंक्शंस और एक्टिंग, बट दे आर कंपैक्ट टुगेदर टू बिकम ए intelligent individual or to create an intelligent individual. Okay, then he assumed that intelligence involved three mutually dependent abilities. तो तांकर कांसेप्ट से कोन एज्यूम करथिले जे इंटेलिजेंस इन्वॉल्व कोउथरे ना तीनटा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज उपरे सेटा फोकस हेई कि रुहे, इन्वॉल्व हेई कि रुहे. तो से तीनटा कोन कोन जोटा कि आमे ऑलरेडी डिस्कशन आगु करि सरचंती जते बेला आमे कांसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस रे थिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को कथारा पढुथले सेही कथा ऊपर सेठी फोकस कले. द फर्स्ट वन इज द सोशल इंटेलिजेंस, दैट इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ पीपल, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म सोशल रिलेशंस. ऑलरेडी ए बाबत डिस्कशन करचन तेनु मु आ एठी बेसी समय नौ नाही. ओके, देन कंक्रीट इंटेलिजेंस, दैट इज एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट. जो माने को पाखरे सेही एबिलिटी थाए, they have concrete intelligence. Then the abstract intelligence, that is ability to verbal and symbolic thinking. They should effectively use the verbal and symbolic processes. Then Thorndike provide 4 attributes of intelligence जोटा कि basic and very important. आमको एई चारिटा कथा जो attributes कुहा जीवो से पॉइंट गुडा को हमें निश्चित भाव में मन रखिबा. एग्जाम रे जो चारिटा पॉइंट ऑप्शन जो देथिबो तीनटा ऑप्शन एई चारिटा भितरु थिबो आ उटे ऑप्शन अलगा थिबो पचार देथिबो जे कोटा मल्टीफैक्टर थ्योरी रे थॉर्नडाइक देथिले बा
कोटा देई नथिले एई चारिटा भितरु कोटा मिसिंग अछि तो सेई जो कांसेप्ट को आमे मन रखिबा एई चारिटा एट्रिब्यूट्स को देकी आमे आगु को जिबा then the first one is label it refers to the difficulty of the task that can be solved okay the first attribute that is label तो आमे जो देखो हमर जो कथाटा अछि इंटेलिजेंस रो कथा those who are more intelligent or those who have appropriate intelligence level they should solve problems easily and effectively okay तो जो मान को पाखरे से इंटेलिजेंस रो कैपेसिटी अछि all these individuals have their own level तांकर से कैपेसिटी टा सेही लेवल ले को लेवल ले तांकर प्रॉब्लम को से माने सॉल्व करि परचंती सो इट रेफर्स टू द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क दैट कैन बी सॉल्व उटे लेवल पर्यंत कथाटा को हमें जो डिस्कशन करंती तो फर्स्ट पॉइंट टा को हम मन रखिबा लेवल सेकंड वन इज द रेंज दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ टास्क एंड एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दैट वी कैन सॉल्व हम रेंज केते हम लेवल फर्स्ट जणा पडिला आमे को लेवल रो प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबा तो सेही इंटेलिजेंस डिसाइड करिवो तमे को लेवल रो तम प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबो सिमिलरली रेंज तम पेरिफेरी तमे केते डिग्री पर्यंत तो गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दैट यू कैन सॉल्व को लेवल पर्यंत जाई कि तमे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फेस करी कि ताको सॉल्व करि परिबो दैट इज योर रेंज दैट इज द अनदर एट्रिब्यूट नेक्स्ट वन इज द एरिया it refers to the total number of simulations at each level to which the individual is able to respond तमे जते बेले प्रॉब्लम को हमें फेस करूचंती तो प्रॉब्लम जो हम पाकु आछी दीज आर द स्टिमुलेशंस ओके तो आमे केते एरिया रो स्टिमुलेशन को हम पाखरे आनी की आमे रेस्पोंड करि परचंती टू सॉल्व द प्रॉब्लम एप्रोप्रिएटली सेही कांसेप्ट को हमें एरिया बोली एठी देखिबा एंड नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द स्पीड that is this is the rapidity with which an individual can solve or respond to the items that is called speed तो मो पाखरे मु जते इंटेलिजेंट थिबी उटा पर्टिकुलर एरिया को हम जदी डिस्कशन करिबा सेही एरिया रे जदी मोर इंटेलिजेंस अधिका थिबो देन आई कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ओके तो जो एरिया रे जहार इंटेलिजेंस अछि से इजीली आउ क्विकली से प्रॉब्लम को से एरिया रे से solve करि परिबो in a speedy manner so these are the four attributes defined by the Thorndike and these four attributes are very important ए concept जहा अछि ताकू टिके साइड कर देले भी चलिबो बट एई चारिटा पॉइंट को हमें मन रखी कि एग्जाम को जिबा दरकार तो एई चारिटा भितरु भी एग्जाम रो आसे जेमिति कि मु तुमको कहिली तीनटा देइथिबो गुटे मिसिंग थिबो आ ए स्पीड जगह रे आउ कोन थिबो बा एरिया जगह रे आउ कोन थिबो बा रेंज जगह रे आउ कोन थिबो बा लेवल जगह रे आउ कोन थिबो तो कोउटा मिसिंग अछि जो फोर एट्रिब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय द Thorndike और मल्टीफैक्टर थ्योरी तो हमको सेटा को आइडेंटिफाई करिवारे भी बहुत समय रे मागे ओके सो दीज आर ऑल अबाउट योर मल्टीफैक्टर थ्योरी और एनार्किक थ्योरी देन द नेक्स्ट थ्योरी दैट इज थ्रस्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन्स जो तमे ना देखि जानि परथो जे ई कांसेप्ट को थ्रस्टन्स देइथिले तो थ्रस्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी कांसेप्ट तो कहीं कुआ गला दैट इज द बेसिक एंड द प्राइमरी एबिलिटी टू डू डिफरेंट टास्क और टू डू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन ए प्रॉपर मैनर तो सेही जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को से डिफाइन कले तांको ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो कौन कौन अछि हमें एबे डिस्कशन करिबा तो थ्रस्टन्स 1937 चैलेंज्ड द कांसेप्ट ऑफ जी फैक्टर जनरल फैक्टर जो होता ता ऊपर से चैलेंज कले किंतु ये डिनाई करनथिले मन रखिबा हमें से जी फैक्टर कांसेप्ट को चैलेंज कले किंतु डिनाई करनथिले आफ्टर एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम 56 डिफरेंट टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज मन रखो 56 डिफरेंट टेस्ट से करथिले ऑफ मेंटल एबिलिटी बेले बेले क्वेश्चन रे आसे केतेटा से मेंटल एबिलिटी टेस्ट करथिले ए कांसेप्ट को वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबा he identified a number of primary mental ability that comprises intelligence as opposed to one general factor जो सिंगल जनरल फैक्टर जोटा हमें कहउछन गुटे बेस ता संगे किछि स्पेसिफिक फैक्टर ऐड हे कि हमको इंटेलिजेंस ये करेबो बट ही बिलीव दैट देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ वन जनरल फैक्टर कांसेप्ट रहिबो बट वन जनरल फैक्टर कांसेप्ट नो डिफरेंट जनरल फैक्टर कांसेप्ट ऊपर से फोकस कले ओके ड्यू टू दैट फैक्टर दैट फैक्टर थ्योरी इज नोन एज
group factor theory. Okay. So these mental operations they constitute a group कौन देखिबा आमे आगु को a second group of mental operations has its own unifying primary factors. A third group factor is a third primary factor and so on. एमिति चलिबो first primary factor, second primary factor, third primary factor एबो different primary factor आमो different individual को पाखरे से define कले. And each of them has its own primary factor. आ समस्त को पाखरे निज निजर primary factor रहिबो. आमे जिबा को गुडा primary factor गले सेठी आमे clearly mention हेची आमे देखिबा. Then each of the primary factor is said to be relatively independent to others. आ सबु primary factor जते सबु रहिबो they are relatively independent to each others. समस्त समस्त को independent समस्त समस्त को way रे समस्त समस्त को process रे निजे निजे काम करंती. And he pointed out that there were 7 primary mental abilities and later on added 2 more. प्रथमे से first से जो define करथिले primary mental ability factor रे सेतिरे से 7टा factor कथा देइथिले. वर्तमान किंतु आउ दुईटा नुवा ऐड ही जाईची. तो वर्तमान हमें 9 मन रखिबा 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ऊपर डिस्कशन करिबा. ओके तो कौन कौन मेंटल एबिलिटी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अछि ता ऊपर वर्तमान आसो डिस्कशन करिबा. तो से जो जेमिति मु कहिली जे प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को से 7टा फास्ट देइथिले तापर से दुईटा ऐड कले डिडक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग ए दुईटा न्यू आई ओटा प्रीवियस रे थिला. The first one is the verbal comprehension factor. Second one is the verbal fluency factor. Third one is the numerical factor. Fourth one is the perpetual speed factor. Fifth one is the inductive reasoning factor. Sixth one is the spatial visualization factor. Seventh one is the memory factor. Eighth, deductive factor or reasoning. And ninth one, that is problem solving ability factor, PS. So, he discussed the 9 mental abilities are there and every individuals have different type of mental ability. तो सही mental ability तांकर intelligence को decide करे. तो कौन कौन ये कथा गुड़ा को हमें डिटेल ले वर्तमान टिके टिके देखिबा. The first one is the primary mental ability. तो से primary mental ability रे first जो हमें function टा देखबा जो ability टा देखिबा that is verbal comprehension factor. This factor involves a person's ability to understand verbal materials. जो माने language को बुझी परथुवे, जो माने word, sentence ई सब कथा को properly deal करि परथुवे. तो सेही जो मान को पाखरे एई भलिया इंटेलिजेंस थाए सेही मान को पाखरे verbal comprehension factor अछि बोली हमें कहिबा. And it is measured by tests such as vocabulary and reading comprehension. आमे गुटे पिला को पढिया पई दबा से केते सुंदर भाबरे पढुची कारण आमे पाठ जेतेबेले गुटे स्टांजा हमकु दिया गला बा गुटे जेतेबेले पैराग्राफ हमकु दिया गला तो पैराग्राफ रे विभिन्न जगह रे विभिन्न कथा अछि हमकु जोटा को पढिबा बेले मेंटेन करिया पई पड़े. फुल स्टॉप अछि टिके पॉज नबा टिके समय अधिका पॉज नबा देन दा कमा. तो एबेले विभिन्न टाइम रे आमे केमिति आम निजो को एक्ट करूचंती रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो बा यूजिंग वोकैबुलरी हो. तो सेही जिंस रे जदी हमें प्रॉपर्ली टेस्ट करिवा तो हमें जानि परिबा से पिला पाखरे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर अछि ना नाही. ओके then the next one is the verbal fluency factor. This ability is involved in rapidly producing words, sentences and other verbal materials. नुआ नुआ word नुआ नुआ sentence से produce करि परथु. तो सेही भले ability जो मान को पाखरे थाए सेही मान को पाखरे हमें verbal fluency factor अछि बोली कहिबा. And it is measured by tests such as one that requires to examine to produce as many as word as possible beginning with a particular letter. तो जेमिति कि से कहिला जे गुटे एल गुटे लेटर देला तो एल लेटर रु लगे कि केते प्रकार रो वर्ड तमे सडनली तयारी करि परिबो. तो विभिन्न पिला अछंती 5टा 7टा 10टा किंतु किछि पिला थिबे से माने बहुत गुडा वर्ड सडनली बाहर कर देई पारंदी. तो सेही भलिया इंडिविजुअल को पाखरे हमें verbal fluency factor अछि बोली कहिबा. ओके then the next one is numerical factor. This ability is involved in rapid arithmetic computation. जोटा numerical number कथा आसीबो तो number आसीबो माने math
तो मैथ रे बेसिकली जेतेबेले एरिथमेटिक कंप्यूटेशन रे जो पिला प्रोफिशिएंट थाए प्रॉपर्ली तार स्किल को से यूज करि पारे दैट इंडिविजुअल हैव न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस and in solving simple arithmetic word problem. Next one is the perpetual speed factor. Perceptual speed factor. So this ability is involved in proof reading and is paid recognition of letter and numbers. Proof reading ro concept ta pakre thibo. And also rapid recognition of letters and numbers. Puzzle fuzzle ei सब कथा को से easily धरि पारे. ओके से इंडिविजुअल मन पाखरे परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर अछि बोली हमें कहबा. इट इज मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज दोज रिक्वायरिंग द क्रॉसिंग आउट ऑफ एन ऑफ एज इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स और इन टेस्ट रिक्वायरिंग रिकॉग्निशन ऑफ व्हिच ऑफ सेवरल पिक्चर्स एज द राइट इन आइडेंटिकल टू द पिक्चर एट द लेफ्ट. तो बेले बेले तो कौन लिखाई छी आमे देखिले पढिले ताको निजे पढि कि भी तमे देखि परिबो किंतु मोटे सिंपल एग्जांपल तुमको दोउची बुझी परिबो. जो आमे रीजनिंग बेले बेले पढू फिगर देइथिबो फिगर जो हमरो नॉन वर्बल रीजनिंग रे विभिन्न एटी चिन्ह देइथिबो तो सेही रिलेटेड एठी आउ किछि चित्र से ऑप्शन ले देइथिबो तो कोउटा सिमिलर बा कोउथिरे डिफरेंसेस अछि এই ভলে যেতলে কোশ্চেন দেইथिबो तो এই जो কথা গুডা কো যে ইজিলি জজ করি পারে তা পাখরে পারসেপচুয়াল স্পিড ফ্যাক্টর अछि বলি আমি কहि परिबा. Then the next one is the inductive reasoning factor. So आमे ऑलरेडी जो माने B.Ed करि सारचंती बा जो माने करूचंती तांकर डिफरेंट मेथोडोलॉजिकल बा जो माने मैथमेटिक्स रो स्टूडेंट थिबे बा विभिन्न जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट भी बेले बेले इंडक्टिव रो कॉन्सेप्ट को हमें डिफाइन डिस्कशन करू. बेसिकली फिलोसॉफी भी डिस्कशन अछि इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. तो किए देथिले सेटा को भी तुम माने टास्क रहिला मते कमेंट बॉक्स रे लिखि कि दबो जे इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग किए देथिले. ओके तो जो इंडक्टिव रीजनिंग कॉन्सेप्ट बा इंडक्टिव कॉन्सेप्ट हमें जानि छंती जे दैट इज स्पेसिफिक टू जनरल. द थिंग्स व्हिच आर स्पेसिफिक इन नेचर दे आर नोन थिंग्स और नोन टू अननोन को जिबा कॉन्सेप्ट को हमें इंडक्टिव प्रोसेस बोली कहू. तो सेही प्रोसेस रे जेतेबेले जने इजीली नै कि जाई पारे निजकू वेरी स्पेसिफिक टू जनरल गोटे जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट को नै कि जीवो गोटे अननोन कॉन्सेप्ट आडू को हम नै कि जाई पारे बा जे नै निजकू नै कि जाई पारे से इंडिविजुअल पाखरे इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर अछि बोली हमें कहंती. एंड दिस एबिलिटी रिक्वायर्स जनरलाइजेशन रीजनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल. ओके स्पेसिफिक टू जनरल को नै कि से जाई परिबो. And it is measured by tests such as letter series, number series and word classification. एई सब जिंसो को आमे जदी गुटे पिला ऊपर टेस्ट करिवा उस जदी इजीली ई कथा को सॉल्व करि परछि then we consider that individual have inductive reasoning factor in which examinee must indicate which of several words does not belong to the others. Okay, so that is the concept of inductive reasoning factor. Then the next one is memory factor. It means the ability to recall and associate previously learned items effectively. जे मेमोरी फैक्टर जहाँ पाखे जिते मेमोरी अधिका अच्छी सी से कथा मेमोरी स्टोर करके रखिबो आउ जते दरकार से बाहर काढ़ी आनिबो. तो रिकॉल एंड एसोसिएट प्रीवियसली लर्नड आइटम्स इफेक्टिवली. प्रीवियस नॉलेज को सी प्रेजेंट सहित इजीली कनेक्ट करि परथु अर्थात से रिकॉल करि परथु सडनली. तो सेही प्रकार रो बा मेमोराइज क्विकली करि परथु. तो एई भले कैपेबिलिटी जहाँ पाखे थाए ता पाखे हम मेमोरी फैक्टर अछि बोली कहिबा. देन द नेक्स्ट वन इज डिडक्टिव फैक्टर. तो आमे डिडक्टिव कांसेप्ट जानि चंती कोन ना ए डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग भी किए देथिले कहिबो मो कमेंट बॉक्स रे लिखि दबो बा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जणे देथिले बोली भी जदी के भाबुथबो तो भी मते कमेंट बॉक्स रे मेसेज करि दबो किए देथिले. ओके तो डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस रे कोन हबो ना जो जनरलाइजेशन कांसेप्ट को आमे बाहर करचंती से जनरलाइज को आमे यूज करके डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करिबा इन ए स्पेसिफिक मैनर. तो एबिलिटी टू यूज जनरलाइज्ड रिजल्ट करेक्टली जो जनरलाइजेशन कांसेप्ट आमे पाइचंती से जनरलाइजेशन कांसेप्ट रु से माने कोन करि परथुबे ना से जनरलाइजेशन कांसेप्ट को इजीली से माने विभिन्न प्रॉब्लम को स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करिबारे से माने यूज करि परथुबे. द नेक्स्ट वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर. दीज इंडिविजुअल्स हैव a tendency or attitude to solve problems independently without help of any individuals or others.
कहारी विदाउट हेल्प रे से इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारंती से भलिया कैपेबिलिटी तांको पाखरे थाए सो दीज आर ऑल अबाउट योर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज तो ए जो आमे ग्रुप फैक्टर थ्योरी रो कथा आमे डिस्कशन करूचंती तो से थ्योरी रे तारो एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कोन अछि आमे देखिबा जे इट कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द मेजरमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स विभिन्न एट्रीब्यूट्स को हमको से मेजर करिबारे हेल्प करे थ्रस्टन स्केल थ्रस्टन तांकर गोटे स्केल डेवलप करथिले मन रखिबो थ्रस्टन स्केल तारो ना जहा की केबे बाहर थिला 1928 रे वाज फर्स्ट फॉर्मल टेक्निक टू मेजरिंग एटीट्यूड्स तो फर्स्ट the formal technique by which we can measure the attitude of individuals that is called Thurston scale. Thurston's theory of intelligence was a major influence on later theories of multiple intelligence. तापरे जो गार्डनर करो गलिफोर्ड करो स्टर्नबर्ग करो ये जो सब थियोरी सब आसिला से थियोरी गुडा को लाइट किए देखिएला ना थ्रस्टन्स थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस They develop a comparative judgment scaling technique that is rank scale can be used to rank all possible feelings related to an issue. तो गोटे पर्टिकुलर इश्यू रे मोर को भलिया फीलिंग्स आसुची ताको रैंकिंग प्रोसेस रे करिबारे हमकु एई थ्रस्टन करो जो लर्निंग थ्योरी हमकु हेल्पफुल करे और टू रिकॉग्नाइज और टू कैटेगराइज पीपल एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ दैट opinion तो हमरो रैंकिंग अनुसार हमरो ओपिनियन कोन से अनुसार हम मध्ये ताको डिसाइड करि पारु the next one is the if the individual wants to perform any particular activity one or more गोटे हो बा more हो of three factors or abilities are involved some of them are important than others तो ए सब कथा को मध्ये इजीली से फाइंड आउट करि परिबो so these are all about Thurston's theory of intelligence and thank you and stay tuned for our new videos. Okay, thank you.